Assalamu alaikum dear students. As know, we have completed the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Uh, Today we will discuss its exercise questions, page 18. Thinking about language. Thinking about language. Now let us start. Question number first is: we have come across words like gale and storm in the account, right? Here are two more words for storm. Storm के लिए दो और words हैं, that is typhoon and cyclone. How many words does your language have for storm? आपकी लैंग्वेज में यानी हमारी लैंग्वेज में storm के लिए और कौन कौन से words आपके पास हैं वो बता दीजिए. We are being asked, we are being questioned that how many words does our language have for storm? So the answer is Hindi. There are many words for storm. स्टॉर्म के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं. कुछ यहाँ पे मैंने ये नोट किए हैं, ज़रा देखिए. नंबर फर्स्ट इज़ तूफ़ान. स्टॉर्म को हम अपनी भाषा में तूफ़ान बोलते हैं, ठीक है ना. अपनी लैंग्वेज में तूफ़ान बोलते हैं. स्टॉर्म को हम आंधी भी बोलते हैं. स्टॉर्म को हम एंड हेड भी बोलते हैं. तूफ़ान बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, एक्स्ट्रा. नाउ here are the terms of different kinds of vessels. Here are the terms for different kinds of vessels: yacht, boat, canoe, ship, steamer, schooner. Think of similar terms in your language. इस अपने लैंग्वेज में इन्हीं टर्म्स को आप ज़रा सोचिए. द आंसर इज़, हमारे पास जो सिमिलर टर्म्स हैं हमारी लैंग्वेज में, जो सिमिलर टर्म्स हैं, दे आर कश्ती है, नाव है, नौका है, जहाज है. दीज आर सम टर्म्स इन आवर लैंग्वेज दैट इज इन हिंदी. नाउ देयर इज अनदर. कैटामैरॉन इज अ काइंड ऑफ बोट. The third is catamaran is a kind of boat. Catamaran is a kind of boat. Do you know which Indian language this word is derived from? Check the dictionary. We are being asked that catamaran is a kind of boat. ये is a kind of boat का एक किस्म है. Do you know which language is this word is derived from? किस लैंग्वेज से इसको डिराइव किया गया है? Check the dictionary. Answer is the catamaran is derived from the Tamil language, right? This word has been derived from the Tamil language. It is a word of Tamil language. Word kalta maran means, which means the wood. Kalta maran means the wood. हम ऐसे भी जानते हैं catamaran means it's a long narrow raft of logs. Let me explain it again. Let me explain it more. Catamaran is a long narrow raft of logs. This word is derived from the Tamil word kaltamaram, which means tied wood. Now question number 4 is, have you heard any boatman songs? आपने कभी किश्ती चलाने वाले का सॉन्ग सुना है? हम सबों ने सुना है. What kind of emotions do these songs usually express? उन सॉन्ग्स में कौन सा इमोशन एक्सप्रेस होता है? वो जो अपनी आवाज़ में, अपनी भाषा में किश्ती चलाते हुए अपना एक गीत गाते हैं समंदर में, तो फिर what kind of emotions do these songs usually express? इनमें कौन सा इमोशन होता है? हाँ, कौन से जज्बात होते हैं? अब आंसर हमने इसको लिखा है, yes, such boatman songs express love and nostalgia. They also express the longing to meet the loved ones, right? They sing of life as never ending journey. वो किस किस्म का गाना गाते हैं? वो गाते हैं कि ज़िंदगी का ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, एक ऐसा लंबा रास्ता है कि जो it does not ends. Also songs ends
in the belief that sooner or later they will touch the coast or reach their destination. और सॉन्ग्स जो हैं दे आर सॉन्ग्स एंड इन द बिलीफ, इस बिलीफ पे, इस नुक्ते पे वो ख़त्म होते हैं कि इस उम्मीद पे वो ख़त्म होते हैं, इस बिलीफ पे ख़त्म होते हैं कि दैट सूनर और लेटर, चाहे जल्दी या देर पे, हम अपने इस कोस्ट पे, अपने मंजिल पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. सो सच, so yes, now the answer is yes. Such boatman song expresses love and nostalgia. They also express the longing to meet the loved ones. They sing of life as never ending long journey. Also all songs end in the belief that sooner or later they will touch the coast or reach the destination. Now working with the words. The following words used in the text as ship terminology or commonly used in another sense. The following words used in the text as ship terminology or used in commonly used in other sense. जो यहाँ पे हमने वर्ड्स राइटर कहता है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो नॉट है, दिस वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड अदर देन दिस शिप टर्मिनोलॉजी. स्टर्न, ये भी एक अलग वर्ड है जो शिप टर्मिनोलॉजी से अलग इस्तेमाल किया जाता है. बूम है, हैच है, एंकर है. दीज आर द वर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन अनदर सेंस other than this ship terminology. So we are being asked to इनका आप माने बता दीजिए और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है दूसरी टर्मिनोलॉजी में. फॉर एग्जांपल नॉट है फर्स्ट वर्ड. नॉट, नॉट मीन्स a tangled mass in something, और नॉट मीन्स interlacing और looping एक्स्ट्रा, राइट. अब हम नॉट को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल एक नॉट को मैं दो तीन यहाँ पे एग्जांपल्स आपको बताता हूँ. इस तरह से आपको नॉट ठीक तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा. नॉट मीन्स, ज़रा एक इस्तेमाल बताते हैं हम. मेक ए नॉट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के एंड में नॉट बना दीजिए. ठीक है ना. नॉट की मीनिंग यहाँ डिफरेंट है. इसी तरह नेक्स्ट है. नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे वो सेंटेंस बनाया, दैट इज़ हर हेयर इज़ फुल ऑफ नॉट्स एंड टैंगल्स. उसका हेयर जो है दैट इज़ फुल ऑफ नॉट्स एंड टैंगल्स. सो देयर इज़ डिफरेंट वर्ड अदर देन द शिप टर्मिनोलॉजी. यहाँ पे नॉट इस्तेमाल हो गया. एक नॉट तो हो गया एट द एंड ऑफ द, मेक ए नॉट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड द नेक्स्ट नॉट इज़, जिस तरह हम दूसरा इस्तेमाल किया है इसको, मेक हर हेयर इज़ फुल ऑफ नॉट्स एंड टैंगल्स. अब द अनदर वर्ड इज़ little knots of people had gathered there. Little knots means little knots, यहाँ पे groups, little groups they of the people they had gathered here. छोटे ग्रुप में लोग जमा हो गए हैं और they are gathered here. So they are here in little knots, छोटे ग्रुपों में. So यहाँ पे knots means groups. इस तरह हमारे पास और एक सेंटेंस में बताता हूँ. My stomach was knots. My stomach was knots, that means was in knots, that means मेरा stomach it was tight. यहाँ पे not जो है that is being used as tight, right. और हमारे पास और एक word है that is stern. Stern, stern means harsh, firm, strict. So इसको हम इस्तेमाल करते हैं. He has a stern face. Stern here means serious face. He has a serious face. और हमारे पास और एक इस्तेमाल इसको हम करते हैं. स्टर्न हेयर मीन्स हॉर्श भी. आई गेव ए स्टर्न वार्निंग टू हिम. दैट मीन्स आई गेव ए स्टर्न वार्निंग टू हिम. इट मीन्स आई गेव ए हॉर्श वार्निंग टू हिम. दैट मीन्स स्टर्न यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एज हॉर्श. और एक वर्ड और एक सेंटेंस में बताता हूँ. वी फेस्ड स्टर्न अपोजिशन. We faced stern action opposition. इसमें it means यहाँ पे stern हमने इस्तेमाल किया difficult as difficult. That means we faced difficult opposition. Now another word is that is boom. Boom means to express a sudden rapid growth. Boom means to express a sudden rapid growth or to increase in popularity. आप ज़रा देखिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं. There is a boom in the car market. That means सडन रैपिड ग्रोथ. इसमें कार में जो सडन इंक्रीज जो है कार के मार्केट में हो गया. देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द कार मार्केट. देयर इज ए
There is a boom. Boom means sudden increase in the core market. नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल जो इस्तेमाल हमने किया दैट मीन्स लाउड नॉइस. बूम मीन्स लाउड नॉइस. इसको हम इस्तेमाल करते हैं लाइक दिस. आई कुड हियर द डिस्टेंट बूम. I could hear the distant boom. It means I can hear the distant loud noise of the guns. Right? अब हमारे पास और एक वर्ड है दैट इज हैच. Hatch means to cause an egg to break in order to allow a young animal to come out or to make a plan. Hatch means ज़रा इसको इस्तेमाल दैट मीन्स व्हेन इसको व्हेन हैच मीन्स दैट केम आउट ऑफ द एग्स. इसको हम इस्तेमाल करते हैं 10 chickens hatched out this morning. That means 10 chickens came out of the eggs this morning, right? और next hatch. Hatch means यहाँ पे to break open. Hatch means to break open. The eggs are burned. The eggs are about to hatch. That means they are about to open. The eggs are about to hatch. That means here hatch means to break open. अब हमारे पास हैचिंग को हम और एक इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ क्रिएटिंग ए सीक्रेट प्लान. दैट मीन्स हैव यू बीन हैचिंग अप ए डील विद हर. दैट मीन्स हैव यू बीन creating a secret plan upon a deal with him. Another word is that is anchor. Anchor means host of an event. Or we can say anchor means a host of an event or a person who can be relied upon for support. We can say make sure that the table in securely anchored, that is fixed firmly. We can say Maria is an anchor of the program, is anchor of the today's program. Maria is an anchor of one of the anchors of today's program. Or Samir is the anchor of today's program. So anchor means host of an event. Now another anchor here means a person can be relied upon for support. We can use this. She anchored reading on the TV the evening news for 7 hours. So host of an event, a person who can be relied upon for the support. So ये दो वर्ड्स इसके सेंटेंसेस जो इसके मीनिंग्स हैं. तो होस्ट ऑफ एन इवेंट इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Rabia anchored the evening news for 7 years. Or we can say she anchored, that means she was reading on the TV extra the evening news for 7 years. ये anchored एक वर्ड हो गया. और एक हमारे पास एंकर की है मीनिंग दैट इज a person who can be relied upon for support. अब इसका इस्तेमाल ऐसे हम कर सकते हैं make sure that the table is securely anchored. That means the table is securely anchored means it is fixed firmly. Now following three compound words end in ship. What does each of them mean? What does each of them mean? Airship, flagship and lightship. Now हमने इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए. Airship means an airship is in a large aircraft without wings. Airship in a large aircraft without wings. Airship यहाँ पे इसको ठीक कीजिएगा. An airship is a large aircraft without wings filled with gas which is lighter than air and driven by engines. What is airship? Airship is a large aircraft without wings. एक large aircraft है but it is without wings. Filled with the gas से बना हुआ है, बेस से भरा हुआ है, which is lighter than air. वो गैस जो air से lighter है and is driven by engines और इसको इंजन चलाते हैं. So airship is a large aircraft without wings filled with gas which is lighter than air and driven by engines. अब हमारे पास है flagship.
Flagship is man ship in a fleet of ships in navy. फ्लैगशिप इज़ द मैन शिप इन ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन नेवी. नेवी में जो मैन शिप होता है, तो फ्लीट, एक फ्लीट में जो ये मैन शिप होता है नेवी में, सो दैट इज़ कॉल्ड ए फ्लैगशिप. Another is that is light ship. Light ship is small ship that stays at a particular place at sea, right? And that has a powerful light on it to warn and guide other ships. ये ऐसा शिप है लाइट शिप दैट स्टेट्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट सी. सी में एक जगह बैठता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एंड दैट हैज़ पावरफुल लाइट ऑन इट. इसमें एक पावरफुल लाइट होता है जो वार्न करता है और गाइड करता है अदर शिप्स को. ठीक है ना. सो नाउ अनदर इज हमारे पास एक क्वेश्चन है. इन द थर्ड पैराग्राफ द अकाउंट वर्ड टेक एज बी मीन्स टू imply somebody. For example, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Singler, to help us tackle of the world's surface sea. So ये हो गया. In the third paragraph, the lines. So in the third paragraph, in lines, we took two crewmen to help us tackle roughest seas. The word took on means to take somebody or to hire somebody. The word हमें यहाँ पे जो word है took on means इसकी meaning बतानी है. It means to take somebody or to hire somebody. To took on means to take somebody or to hire somebody. So thank you very much. ये exercise complete हो गई. आपने अंडरस्टैंड की होगी. आपका बहुत बहुत